Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 8. Here is your maths teacher Amir Haider. And dear students, today we are going to switch exercise number 6. This is the exercise of chapter number 6, logarithms. As we have learned basic points regarding logarithm, and today we are going to solve some exercise problems regarding logarithms. So here the exercise number 6 is in front of you. Question number 1 is fill in the blanks. Question number 2 is state whether the following are true or false. And question number 3, write the following numbers in exponential form. Okay, so question number 1 and 2 can be solved on your textbook, and I am going to switch from question number 3. So question number 3 is says that write the following numbers in exponential form. As you have learnt a whole chapter regarding exponents, chapter number 5. So I hope you will be very well known from the word exponents. Exponent means power raised on a number. किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होता है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स मिले हुए हैं क्वेश्चन में, जैसे 121 है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, यानी कि सेकंड नंबर 128, 729, 1000, इनको क्या करना है, आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको नंबर को पावर में लिखना है. ठीक है, तो पहला जो लिखा हुआ है 121, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है. 121 को सॉल्यूशन में देखें कि 121 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11, यानी कि 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा. अब 2 टाइम्स 11 आ गया, यानी कि एक 11 के ऊपर पावर 1, दूसरे 11 के ऊपर पावर 1. अब ये 1 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा. मतलब 11 के ऊपर अगर आप पावर 2 देंगे, एक्सपोनेंट 2 देंगे, तो ये 121 बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास 128 है, तो 128 के आपने निकाले फैक्टर्स, तो आपके पास 2 आ रहा है 7 टाइम्स. ठीक है, यानी कि 7 टाइम्स 2 आ रहा है. इट मीन्स आपने 2 के ऊपर पावर 7 देना है. इट मीन्स यू हैव टू पुट पावर 7 ऑन 2. सो this is written in the exponential form. It means 2 power 7 is the exponential form of the number 128. And the homework is in front of you. You have to complete question number 3. It means you have to solve another 2 problems from question number 3 on your copy. Then you have to share these 2 questions on WhatsApp, and these 2 questions which I have solved, so you have to write on your fair copies. Okay, so complete your homework. Take care. Allah Hafiz.